Hello students, welcome back to the Tantray physics class. Today I will give a lecture on circular motion. It is the first lecture on circular motion and possibly it will take 2 to 3 lectures with all the examples. Okay, let me start. Circular motion कहाँ से start? Circular motion कहाँ से start होगा? Circular motion में आपको पता है कि there are so many examples of circular motion in nature. जैसे Earth revolves around the sun, Jupiter revolving around the sun through gravitational force, electron revolving around the nucleus. Sometimes also you also tend to move in a circle. लेकिन जब आप सर्कल में मूव करने की कोशिश करते हो तो गिरने का भी खतरा होता है. और यूजुअली एक्सीडेंट्स वहां होते हैं जहां कर्व होता है, रोड कर्व होता है. तो कर्व में मूव करना या सर्कल में मूव करना इजी नहीं है. उसके लिए देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल फोर्स दैट कीप्स यू मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. तो नेचर में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे सर्कुलर मोशन के. तो अब स्टार्ट सर्कुलर मोशन करना है तो कैसे करेंगे? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सर्कुलर मोशन में व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द वेरिएबल्स इन सर्कुलर मोशन. वो पैरामीटर्स और वेरिएबल्स में आपस में जो रिलेशनशिप्स है वो हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे. And then it will be fun to discuss circular motion once we know those variables. So what are the possible variables that are involved in circular motion? क्या वो variables है? क्या होंगे? Angular displacement, angular velocity, frequency of revolution, time period of a particle moving in a circle. ये सब कुछ पैरामीटर्स है जिनको हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी होगी पहले. बाद में सर्कुलर मोशन हम इजी से डील कर सकते हैं. तो पॉइंट नंबर 1 विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, एंगुलर वेरिएबल्स. एंगुलर वेरिएबल्स, एंगुलर वेरिएबल्स ये है पहला जो चीज है, एंगुलर वेरिएबल्स. एंगुलर वेरिएबल्स में क्या क्या आएगा पहले? ठीक है, पहले आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये आएगा पहले. फिर आएगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर वेलोसिटी, यही पॉइंट नंबर 1 में सी, एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये 3 चीजें आएंगे उसको डिस्कस करने के लिए, सर्कुलर मोशन को डिस्कस करने के लिए. वैसे ये जनरल टर्म्स है. सर्कुलर मोशन में भी इन 3 चीज का जो रोल है वो सर्कुलर मोशन में भी है और भी एंगुलर मोशन में भी है. जैसे एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो का जो चैप्टर है उसमें ये सारा कुछ यूज होता है. लेकिन सर्कुलर मोशन में इन पर्टिकुलर ये यूज होता है. ओके, नाउ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिस्कस करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं ताकि वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स मच बेटर. ओके, जरा देखिए दीज थिंग्स, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, दे शुड बी डिफाइंड इन रेफरेंस टू ए फिक्स्ड पॉइंट. एक फिक्स्ड पॉइंट को देख करके हमें ये चीजें डिफाइन करनी होंगी. तो देख लीजिए आप, या तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस लीजिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम लीजिए या कोई भी फिक्स्ड पॉइंट लीजिए. लेट मी टेक ए फिक्स्ड पॉइंट हियर, पॉइंट ओ. ये पॉइंट ओ फिक्स्ड पॉइंट है, स्पेस में एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये पार्टिकल है. ये पार्टिकल है, इसका पोजीशन समझो ओके, पोजीशन पी है. ये पार्टिकल है, इसका ये पोजीशन है, ये यहां पर इस सिचुएशन इस पॉइंट पर है. तो इसका रेडियस वेक्टर आर है, R1 समझो, ये रेडियस वेक्टर है.
मतलब अगर ये पार्टिकल मूव करेगा तो ये रेडियस वेक्टर चेंज होता जाएगा। अगर इस रेडियस वेक्टर का आप डिफरेंशिएशन करोगे आपको इस पार्टिकल का वेलोसिटी मिलेगा, एज क्लियर एज दैट। तो अब ये पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है, मूव्स एंड मूव्स रीचेस हियर, ओके, रीचेस हियर। तो यहां नया रेडियस वेक्टर प्रोड्यूस हुआ, न्यू रेडियस वेक्टर। दैट मीन्स जब पार्टिकल यहां से यहां आता है किसी भी पाथ के थ्रू तो इसका रेडियस वेक्टर चेंज हो जाता है फ्रॉम r1 टू r2, और इस r1 रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ, शायद ये शॉर्टर हुआ, और इसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ। अच्छा, नाउ अब देखिए जब पार्टिकल यहां से यहां किसी पाथ से भी आता है तो मतलब यह है कि इसने डिस्टेंस भी कवर किया, डेल्टा एस कवर किया, और साथ में डिस्प्लेसमेंट ये हुआ डेल्टा आर। और अगर ये पार्टिकल यहां टाइम t1 पर था और यहां q पोजीशन पर आया और यहां टाइम t2 है तो टाइम इंटरवल भी t2 माइनस t1 हुआ। सो इसने पाथ भी ट्रेवल किया, इसने डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल किया इसी टाइम में, और इसने और एक चीज किया, इस पार्टिकल ने इस पॉइंट के अबाउट एंगल भी ट्रेवर्स किया, डेल्टा थीटा, that is all. So when a particle moves from one position to another position, it travels the distance, it travels the displacement, it also traverses what? It is a radius vector cuts an angle, traverses an angle, या आप describes an angle, बस। तो इस चीज को देखकर हम सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर डिफाइन करना चाहता हूं इस पार्टिकल का एवरेज स्पीड इज डेल्टा एस एक्चुअल पाथ बाय डेल्टा टी, दैट इज t2 माइनस t1। इस पार्टिकल का जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट बाय t2 माइनस t1, दैट इज टाइम इंटरवल। और इस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो हमें यहां कंसर्न पॉइंट है, that is the concern point. Angular displacement, that is delta theta, is defined as the angle traversed or angle described by the radius vector. This R radius vector is defined as the angle described by the radius vector of the particle about a fixed point O, about a fixed point O. That's all. जब पार्टिकल यहां से यहां गया किसी भी पाथ के थ्रू, इसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया ये वाला, और इसके रेडियस वेक्टर ने एंगल कट किया अबाउट दिस ओ। एंगल तो अबाउट ओ देखना पड़ेगा कितना कट हुआ, अगर ये पॉइंट यहां नहीं कहीं और होता तो एंगल डिस्क्राइब्ड डिफरेंट होगा। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू डिफाइन अ पॉइंट वाइल अबाउट व्हिच वी हैव टू सी हाउ मच एंगल इज कट। ओके, नाउ that is delta theta, that is the angular displacement. When a particle goes from here to here, it is the angle cut by the radius vector. Okay, now what is the angular velocity? Angular velocity written as omega is equal to, कैसे define होगा? That is the angle cut by this radius vector in 1 second. This is the angle cut in this much of time, t2 minus t1. ये टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में इतना एंगल कट हुआ। एक सेकंड में इस रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल कट किया, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। सो दैट इज, इट इज डेल्टा थीटा इज द एंगल कट, डेल्टा थीटा इज द एंगल कट बाय टाइम इंटरवल, दैट इज t2 minus t1. Okay, t2 minus t1, that is delta theta by delta t. This is the angular velocity का definition. So angular velocity is defined as the angle cut in 1 second.
आर डिस्क्राइब्ड इन 1 सेकंड बाय द रेडियस वेक्टर, जब पार्टिकल मूव करता है, दैट्स ऑल। तो अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात होगी तब थीटा का डिफरेंशिएशन है डी थीटा बाय डी टी, एज यू ऑलरेडी नो फॉर टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वैल्यूज वी हैव टू यूज calculus differentiation. So for instant it is average angular velocity. Average angular velocity is total angle cut by total time. But instantaneous की बात होगी, that will be instantaneous omega will be d theta by dt. So instantaneous omega is d theta by dt. You have to differentiate theta with respect to time. This is angular velocity of a particle moving. Again I repeat, angular velocity is defined about a point. Angle cut by the moving body is about a point, right? Okay, now see what is the angular acceleration. Angular acceleration कैसे define करेंगे? Angular acceleration is change in angular velocity in 1 second. Suppose the particle moves in such a way that this radius vector cuts different angles in different time intervals. So first the particle cuts less angle in some time, but it now cuts more angle in the same time. That means omega is changing. If you take the correspondence and analogy to the linear motion, जब वहां velocity change हो जाता है तो acceleration बन जाता है. अगर यहां angular velocity change होगा तो acceleration बनेगा. लेकिन कौन सा acceleration? Angular acceleration, right? So what is angular acceleration? Angular acceleration defined as alpha, written as alpha. Okay, that is, yes, that is change in angular velocity by t2 minus t1. मतलब क्या हुआ, अगर यहां इस q पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, अगर यहां इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 divided by t2 minus t1. So it is delta omega by delta t. हाँ, ऑब्वियसली अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात होगी तो आपको ओमेगा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ओमेगा एट ए पर्टिकुलर टाइम कुछ होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर उसको डिफरेंशिएट करके आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा. इंस्टेंटेनियस वैल्यू, instantaneous alpha is equal to d omega by dt. But that is all. These are a few जो मैंने definitions आपको बताए. So angular motion में इसमें मतलब जब आप angular momentum की बात करोगे या फिर आप torque की बात वहां करोगे, वहां rotational dynamics में, वहां भी ये सब चीजें आती है. Circular motion में तो आता ही है, because circular motion is also a rotational type of a motion. Okay, now let me go to general relationships. Easy, but general relationships of this angular variables to linear variables. There's a relationship between angular variables and linear variables. Whole lot of equations. Point number second. तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जैसे आपको velocity का relationship है, velocity after some time is equal to initial velocity plus acceleration into time. जैसे आपको पता है displacement s is equal to initial velocity time plus 1 by 2 at square. जैसे आप लिखते हैं v square minus u square is equal to 2as. So these are the relationships in linear dynamics, in linear motion, where acceleration is constant. So for constant acceleration, you write these set of equations. So what are those set of equations that you write for translational motion? For translational motion, you write these equations, that is v u plus at, v is equal to u plus at, and then you write s displacement is equal to initial velocity into time plus 1 by 2 at square. Then you write v square minus u square is equal to as. But remember it, these are the relationships which are good for constant acceleration. For variable acceleration, again you go to the calculus there in linear dynamics. But what are the equations here? Suppose I ask you, what is angular velocity after some time? जैसे वहां velocity after some time
इसका भी वही इक्वेशन है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, just time interval, but this time becomes time interval, this t becomes time interval from 0 to t. That is a time interval itself. T is itself a time interval if we start from 0 time. Acha, now what is theta? Angular displacement. Angular displacement is initial angular velocity into time plus 1 by 2 alpha t square. Omega square, angular velocity after some time square of that minus initial angular velocity square is equal to alpha theta. These are the three relationships correspond to those three relationships which we have in translational motion. ये तीन इक्वेशंस हमारे पास है, लेकिन बी केयरफुल, यहां वहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहां अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए, बट अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ये तीन इक्वेशंस हमें याद रखनी है टू डू सर्कुलर मोशन. ओके, नंबर थर्ड, this is very easy to remember because they are analogous to translation motion equations where acceleration is constant. Okay, third point. Third, let me go to third point. Circular motion itself, particle moving in a circle. Have a look. It is a center and it is a particle here, then it reaches here, it is radius r, it moves in a constant circle where radius is constant, and the particle moves from here from position P to position Q, and therefore it traverses the angle, okay, delta theta ही मान लो, delta theta, and from here to here it covers a distance of delta s. This is the actual path of the particle in the circular motion. Displacement की बात होगी तो डायरेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन से, ये और ये कनेक्ट करना पड़ेगा, but we are not interested in displacement here because we are not interested in velocity. Maybe we may be interested in speed, but for that speed delta s is sufficient because you know speed is defined as distance by time, right? Okay, अच्छा, तो यहां आप मुझे बताइए इस सर्कुलर मोशन को देख करके, इस सर्कुलर मोशन को देख करके अगर देखा यहां वेलोसिटी टेंजेंशियल ऐसे और यहां वेलोसिटी टेंजेंशियल ऐसे, वेलोसिटीज आर डिफरेंट बट स्पीड इज द सेम. अगर स्पीड सेम रखना चाहते हो, अगर स्पीड भी वेरी करता है इन सर्कुलर मोशन तो दैट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो ये v1 कर दो, ये v2 कर दो. तो ठीक है, अगर मैं लिखूंगा इफ v1 vector magnitude is equal to v2 vector magnitude is equal to v, let me suppose that means particle moves in a circle with constant speed, particle moves in a circle with constant speed. तो उस सूरत में मुझे बताइए, उस सूरत में मुझे बताइए ये जो डेल्टा एस है ये किसके बराबर है. अगर आपको याद होगा कि arc distance is radius into angle, this arc distance is equal to radius into angle, arc is the distance from here to here, so I will write delta s is equal to r delta theta. तो एक इक्वेशन आपको मिला, सिंपल सा इक्वेशन है किसके दरमियान, ट्रांसलेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में, क्योंकि डेल्टा थीटा इज समथिंग दैट इज एंगल कट बाय द रेडियस वेक्टर and r is the radius and delta s is the translational motion of the particle. तो आपको रिलेशन मिला ट्रांसलेशनल मोशन में और सर्कुलर मोशन में. ठीक, तो अगर मैं डेल्टा टी से डेल्टा डिवाइड करूंगा, सपोज डिवाइडिंग बाय डेल्टा थीटा डेल्टा टी, सो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. तो ये तो हो गया, ये हो गया स्पीड, because delta s by delta t is speed, speed is equal to r omega. तो आपको दूसरा इक्वेशन मिला, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. This is the equation relationship between translational motion and circular motion. This is translational motion, circular motion. So you please remember speed is r always equal to r omega. Speed of a particle is r omega. R is what? Radius of the circle, and omega is angular velocity of the circle, angular velocity of the particle moving in a circle. वेरी सिंपल. अच्छा, तो यहां पर मैंने वैसे स्पीड कांस्टेंट रखा था. अगर स्पीड वेरी करता है, सपोज स्पीड वेरीज,
सो व्हाट डू यू राइट? तो अगर स्पीड वेरी करता है, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, we get what we get? शाबाश। so dv by dt is equal to r, कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएट तो होगा नहीं बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट, तो d ओमेगा by dt। तो व्हाट इज दिस dv by dt एंड व्हाट इज दिस d ओमेगा by dt? इसको कंसंट्रेट जरा करो, dv by dt क्या होता है? व्हाट इज dv by dt? व्हाट इज dv by dt? यस, शायद आप सोचोगे dv by dt is acceleration. No, it is not that acceleration what you are familiar with. It is rate of change of speed. And rate of change of speed is always equal to, remember it for all times to come, rate of change of speed, जब speed vary होता हो, उसका rate of change होता है tangential acceleration. So it is tangential acceleration, at is equal to, ये वाला at is equal to r and this is alpha. ये याद रखने की बात है। So tangential acceleration is always equal to r alpha, और tangential acceleration is rate of change of speed. तो ये मैं यहां पर स्ट्रेस करता हूं, tangential acceleration is dv by dt, मगर v is not velocity total, it is speed only, so it is rate of change of speed. जब स्पीड चेंज होता है, याद रखो ये बात, जब स्पीड चेंज होता है, स्पीड ओनली स्पीड, वेलोसिटी में दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, स्पीड कंपोनेंट होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी की दो चीजें, स्पीड भी और डायरेक्शन भी। जब सिर्फ स्पीड चेंज होगा, समझो देयर इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। सो मैं यहां लिखूंगा सो दैट इट बिकम्स क्लियर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन the same, direction the same as speed, same as velocity, same as velocity. मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है, अगर स्पीड वेरी होता हो समझो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कभी स्पीड वेरी नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन वेरी होता है वेलोसिटी का, समझो जो ये एक्सेलरेशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। Tangential acceleration has the same direction as velocity. तो अगर स्पीड चेंज होता है, बी केयरफुल अबाउट इट, अगर स्पीड चेंज होता है समझो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अगर डायरेक्शन सिर्फ चेंज होता है समझो जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है। अगर दोनों चेंज होते हैं, स्पीड भी और डायरेक्शन भी, समझो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है दैट इज नॉट पैरेलल टू दिस वेलोसिटी, दैट इज नॉट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट मेक्स सम एंगल, that has some angle, not 90, not 0. Keep that in your mind. या you can ऐसे पिक आप इसको कर सकते हो, अगर डायरेक्शन भी चेंज होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी, समझो जो एक्सेलरेशन है इसके दो कंपोनेंट्स है, दोनों टेंजेंशियल कंपोनेंट भी और नॉर्मल कंपोनेंट भी, दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसलिए दोनों चीजें चेंज हो रही है। ओके, तो यह इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r alpha. ओके, it is tangential acceleration has the same direction as velocity, and tangential acceleration's rate of change of speed, be that remember that for all times to come. Okay, now और अगर ये बॉडी पूरा सर्कल बनाती है और स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, यहां पर स्पीड चेंज हो रहा है तभी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ये अगर कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो अल्फा भी 0 हो गया, तो वो आप निकालते रहेंगे। तो इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन ओमेगा इज कांस्टेंट, व्हेन इफ स्पीड इज कांस्टेंट at is 0, अगर at is 0 है तो मींस अल्फा इज 0, अगर अल्फा 0 है दैट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0, मींस एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दैट मींस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 pi f, where f is revolutions per second, where f is frequency, it is 2 pi by t time period. So
frequency is equal to 1 by time period. Frequency is revolutions per second, and t is time period, time taken to complete one revolution in a circle, to complete one revolution. One revolution in a circle. इसको समझने की जरूरत है अच्छी तरह से, ताकि हम सर्कुलर मोशन को अच्छी तरह से कर सकें. चलिए, ये ठीक है फिलहाल. थर्ड पॉइंट point number third about circular motion. Third point. Okay, let me give you an example. A particle moves in a circle of radius 20 centimeters with linear speed, with linear velocity of 10 meters per second. Find out its angular velocity. ये है हमारा क्वेश्चन. हमें एंगुलर वेलोसिटी इसका निकालना पड़ेगा. चलो यहां पर डायग्राम बनाता हूं. A particle moves in a circle with speed v is equal to okay how much 10 meters per second. और रेडियस क्या है सर्कल का? रेडियस है 20 सेंटीमीटर्स. स्पीड इज कांस्टेंट. बताइए इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? What is angular velocity? How much angle it cuts in 1 second? What is angular velocity? That is also 2 pi by t. What is angular velocity? That is also 2 pi f. F is the revolution per second. तो क्या है यहां पर ओमेगा? क्या निकालो? ओमेगा निकालना पड़ेगा. Recall the equation. Recall your equation. The equation that you have, that is v is equal to r omega. If you remember, just now we have derived this. So what is omega? That is v by r. What is v? That is 10. What is r? That is 20 centimeters. That is 20 centimeter को मीटर बनाइए -2. तो that is 2 10⁻² को ऊपर लेकर के 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1000 होगा by 20. तो ये खत्म होगा. So what is the answer? 50. What? Omega. Angle per second. इसका जो यूनिट है एंगल पर सेकेंड, दैट इज रेडियंस पर सेकेंड. खत्म, फिनिश. कॉपी इसका करो. फोर्थ पॉइंट. Let me make the problem like this. A particle moves in a circle and its velocity changes from 5 meters per second to 7 meters per second. Its velocity changes from 5 meters per second to 7 meters per second in 2 seconds. The radius of the circle is 10 centimeters. वेलोसिटी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, इतना मैग्नीट्यूड होता है. एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
AT is uniform. The tangential acceleration is uniform. Is uniform. क्या मतलब है वो? Find angular acceleration. Angular acceleration मतलब हमें अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना पड़ेगा. A particle moves in a circle, it is speed increases, speed इसका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ओमेगा ना, ओमेगा आप कांस्टेंट है ना, ओमेगा कांस्टेंट है नो, ना स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज हो रहा है तो ओमेगा भी चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल v इज इक्वल टू r ओमेगा. अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो ओमेगा भी चेंज हो रहा है, r तो कांस्टेंट है, इट्स मूविंग इन द सेम सर्कल. तो अगर v स्पीड कांस्टेंट नहीं है, समझो देयर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, समझो देयर इज अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन. लेकिन स्पीड चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो कांस्टेंट, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो हमने यहां लिखा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ओके, स्पीड चेंज हो रहा है, दैट क्रिएट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. इसका मतलब आपके पास कोई अमाउंट है, दैट अमाउंट चेंजेस, बट द चेंज इन अमाउंट इज कांस्टेंट. You have 100 rupees, then tomorrow you have 200 rupees, 300 rupees, 400 rupees. Every day the increase of your amount is 100 rupees. So increase in amount is constant. So that's what I say. Speed changes, but rate of change of speed is constant. That's what I mean by that. Okay. तो अब angular acceleration निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 5 to 7 it changes in 2 seconds, and the radius of the circle is given to be 10 centimeters. Tangential acceleration is uniform. Alpha निकालना है. जरा सोचो इसके बारे में. Have a pause for a moment and look at the question and see if you can do it yourself. The speed change from 5 to 7 in 2 seconds. Radius of the circle is given to be 10 centimeters. आपको angular acceleration निकालना है. Have a pause for a moment and think for the situation. हो सकता है आप खुद भी इस चीज को कर सकोगे. ओके, आई हैव टू रिमेंबर इट. 5 to 7, इट चेंज फ्रॉम 5 to 7 in 2 seconds बिकॉज आई एम रबिंग इट अप. मैं इसको रब कर रहा हूं. द स्पीड चेंज फ्रॉम 5 to 7 in 2 seconds. From there I may find tangential acceleration, and then I connect tangential acceleration to angular acceleration. Then I can solve the problem. Okay, चलिए. तो यहां जरा देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं स्पीड को, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला, आर तो वही है. अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो अल्फा मिलेगा. तो ये पहले भी मैंने आपको बताया, यहां भी मिल सकता है. इसको डिफरेंशिएट करने से ये मिलेगा, ओमेगा को डिफरेंशिएट करने से अल्फा मिलेगा, आर तो वही है. अच्छा, नाउ व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? चेंज इन स्पीड. What is change in speed? dv by dt. What is change in speed? Change in speed is 7 minus 5. 7 final minus 5 in how much time? Delta t, that is 2 seconds. वो दिया था, that is 2 by 2. That is 1 meter per second square. Tangential acceleration. अच्छा, now अब मुझे अल्फा निकालना है. तो AT is equal to R alpha. What is alpha now? That is AT by R. What is AT got from here? 1. What is this R? If I remember it properly when I wrote down the question, that was 10 centimeters. 10 into 10 raised to the power minus 2. ये 10 ऊपर कर दिया, 10 raised to the power minus 1. 10 100 by 10, that is 10 what? अल्फा का क्या यूनिट हो सकता है? एक्सेलरेशन ही तो है, मगर है एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगल बाय एंगल का देखना है, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन की वजह से सेकंड स्क्वायर नीचे. दैट्स ऑल. सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑन सर्कुलर मोशन.
just start, so that we learn about the parameters, the angular variables, and how they can be related to the linear dynamics, some relationships. So you do it well, and in next lecture I will go ahead, and within three lectures I will mostly complete it with examples and with applications and problems. But don't forget to download the literature from my app, from you can get बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां से मिलेंगे, और उनको करने की कोशिश करो, और फिर यही लेक्चर आप अटेंड करो, तो आपको वो मुझे लगता है कि यू कैन डू योर जॉब वेल. ओके, थैंक यू.